Hello everyone and welcome to wingsekudaan in collaboration with Sunya IAS. आज हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं इल्का हसन from Sopore Baramulla, who has scored 84th rank in the recently conducted JKAS 2022 exam, and we'd like to know her story, her struggle with the examination process, and how she was able to score such a good rank. Welcome Ilka, and thank you so much for sparing some time for us. So thank you for having me here so that I can get connected to the students who are aspiring to get into the services. So my journey started in 2019, but somehow I knew that I have to do this only from the college time only. So I kept on studying during the college years. For example, I knew that I will take the zoology optional, so I did the zoology honors from Delhi University. I streamlined my subjects so that the preparation will get easier for me in the upcoming years. But I'm sorry to stop you, Ilka. I'm sorry to stop you. Before we proceed, I think the viewers would like to know कि आप कहाँ से हैं, basically सोपोर में कहाँ से, आपकी schooling कहाँ से हुई और graduation, how come you went to Delhi for graduation? थोड़ा basics है ना, ताकि connect बन सके. Yes, sir. So please tell us about your schooling and your where exactly are you from Sopore from, and graduation कहाँ से किया आपने ये सब चीजें? So I am from Bagir Ahmed, Iqbal Nagar, Sopore, and मेरी schooling district इधर बारामूला St. Joseph's Higher Secondary School से हुई है. उसके बाद मेरी graduation हंसराज College, Delhi University से हुई. After that, I started fully fledged studying for this exam, civil services. For that, I got enrolled in Jamia RCA. But at the same time, I knew it that I cannot fully rely on this because we have seen people who have given even exhausted their attempts and got nothing at the end. So I wanted to keep something at the backup. So I did my Bachelor of Education BEd as well as my Master's in Environmental Sciences, and I was pursuing both the courses. One was distance and one was regular. And I gave one attempt of JKPSC in 2021. At that point only, I got eligible for the exam. Then I gave unfortunately, I couldn't clear it in the very first go. I scored 1030 marks in the first attempt. But it was very disheartening that I couldn't get into the list. And I started to prepare again. Because all the preparation was done already. Sara answer writing, practice, revisions, all my notes. जो फिर next mains था, it was like 20 days के बीच में. मैंने कोई book नहीं वापस से पढ़ी है. I had those notes made 2 pages, 3 pages के. I only revised those notes. Nothing specific I did. No book. I opened no book in particular. Even for my optional, I revised it in like 2 or 3 days, whole optional. So I went to give the mains and somehow I made it this time, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ilka, as such, इस बार ही हमने देखा कि second attempt वाले बहुत से लोग हैं. मतलब normally the norm is, आपका भी second attempt था, right? Am I right? Yes, sir. So इस बार ही second attempt वाले बहुत लोग हैं, and I have been able to, I mean, I cannot say it scientifically कि भाई हाँ ये जो मैं opinion रखने जा रहा हूँ वही सही है, but कहीं ना कहीं exam process का regular होना और पहली mistake से पहले attempt में जो mistake commit की उसको prevent करके second attempt को better करना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा reason रहा लोगों के लिए, because before 2021 of attempt, the exams were not continuous, not every year. मुझे इस साल बहुत से लोग दिखे जिन्होंने ये कॉमन चीज बोली कि फर्स्ट ईयर में हमने थोड़ी बहुत जो भी कमी बेशी रह गई थी, we tried to overcome it in the next attempt and we got through. So how far do you agree with it? I mean, is it true that the examination process जो लगातार हुआ और आपने जो पहली mistake learn की और immediately अगला मेंस भी आपको लिखने को मिला, so that went a long way to ensure your selection? Yes, sir, definitely. For example, I'll give my example only कि mains में क्या हुआ था, first mains जो था, I
completed all the answers. I left no answer. But एक वो कमी मेरे को लगी कि जो कंटेंट की क्वालिटी है, I could have enhanced it. थोड़ा वो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, एक्स्ट्रा फ्लो चार्ट्स, एक्स्ट्रा बुलेट पॉइंट्स ऐड किए होते तो मे बी और मार्क्स आ जाते. तो उसके बाद ना मेंस के बाद ही आई स्टार्टेड कि नहीं, मे बी अगर इस बार नहीं हुआ, आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, मे बी इट विल हेल्प मी इन नेक्स्ट यूपीएससी मेंस सम टाइम, मे बी in the JKPSC means I kept on being in the process. I never left it. So I'll add one thing that meanwhile I started my online business also. But for that I did not stop my preparation. I kept on doing it, and somehow it helped me this time. I enhanced my content. I enriched it. This time it helped me. All loopholes जो थे उनको मैंने fill up किया and I made it. और जहां तक बात की जाए, क्योंकि आपने मेंशन किया जामिया मिलिया इस्लामिया आरसीए रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, आई नो अबाउट इट बट मेनी पीपल डोंट. सो आई वुड लाइक टू यू टू एक्सप्लेन टू द पीपल व्हाट इज आरसीए, और साथ में अगर आप बता दें कि उसकी एडमिशन के लिए कैसे लोग जा सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इकोसिस्टम यू गॉट देयर, और आरसीए का कितना रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में और सिलेक्शन में. Yes, sir. सर एक्चुअली ये जो प्रिपरेशन है, हम अक्सर बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि एक कमरे में बैठो, चोरी बैठो, दुनिया से दूर बैठो, कोई आपको देखे भी नहीं, ऐसे पढ़ाई करो एक कमरे. बट इट इज नॉट सो. ये ऐसी प्रिपरेशन है, यू हैव टू बी इन कंटैक्ट विद योर सीनियर्स जो आपको कंटिन्यूसली गाइड करते रहे. और वो भी इसमें गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीनियर्स है या फिर जो है जो who have already failed at some stage, they know कि where a student lacks, तो they guide you, एक targeted way में they guide you. तो जामिया आरसीए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है which is funded by Ministry of Minority Affairs, and you go there, there is a process. पहले ये prelims exam होता है उसका, उसके बाद you have this interview, you have to qualify these 2 exams and then you get admission in this institution. And atmosphere is very cordial for studies. Everyone is studying, everyone is helping each other. Notes, किसी से भी notes ले लो, उसी time आपको notes मिल जाएंगे. For example, even I used ethics notes from some seniors who got selected in UPSC. So in this way RC is very helpful to students who are preparing in far-flung areas, and it's affordable also, so people prefer to go to such places, and students should really try for these institutions. In fact, I have observed that many people from Srinagar and Kashmir Valley know about it, but जम्मू की साइड से लोगों को कम पता है इसके बारे में. और जो लोग देख रहे हैं उनको बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, जामिया हमदर्द रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी एंड हमदर्द स्टडी सर्कल, ये 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे जाके you can get a good ecosystem to study. These are not coaching centers as such. They provide you the ecosystem, they provide you the वो माहौल है पढ़ाई का जो आपको चाहिए, और आपके इर्द गिर्द मेंटोर्स मिल जाएंगे, आपको सही गाइड कर लेंगे, और बड़ा पॉजिटिव कंपटीशन है वहां पे. नोट्स शेयर हो जाते हैं, आपको बड़े अफोर्डेबल मैनर में दिल्ली के प्राइम इंस्टीट्यूट में रहने को मिल जाता है, वाईफाई का एक्सेस है, लाइब्रेरी का एक्सेस है. और रिसेंटली अभी मुझे लगता है प्रीलिम्स के फौरन बाद इनके एग्जाम हो जाते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद. तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहें, जामिया मिलिया इस्लामिया आरसीए की वेबसाइट पे जाएं, हमदर्द स्टडी सर्कल की वेबसाइट पे जाएं, और वहां से आप चेक करें. मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक डाल दूं बाकी सबके फायदे के लिए. सो एज फार एज योर ऑप्शनल इज कंसर्न, जोलॉजी, जहां तक मैंने सुना है लोग कहते हैं कि जोलॉजी केएस के लिए तो अच्छा है पर यूपीएससी के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा सुनने में आता है हमेशा. तो आपकी क्या ओपिनियन इस बारे में? आई बिलीव कि यूपीएससी के लिए भी सही है, क्योंकि हमारे एक सीनियर थे हु गॉट सिलेक्टेड इन इंडियन फॉरेन सर्विसेज दिस ईयर एंड ही वाज इन टॉप 50s. सो आई बिलीव उनके ऑप्शनल में भी अराउंड 300 marks थे. So I think zoology is a scoring optional. If we write very well and diagrams are up to the mark, then I don't think that that examiner gets a reason to cut the marks. आपकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में जोलॉजी था? Yes, zoology ऑनर्स है मेरा ग्रेजुएशन. ओके, एंड देन मास्टर्स आपने एनवायरनमेंट में की? Yes sir.
Okay. Then you already had a good practice of diagrams, क्योंकि इसमें zoology में और botany में भी you have to have the ability of making very detailed diagrams. If not Yes, beautiful diagrams, at least very detailed and easy to read diagrams. clear. That is a lot role to play. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. In fact, इस बारी I had the opportunity to interview Persanjit Kaur, also ranked 11th in the UPSC. She also she did her masters in chemistry, but still opted to go for zoology. So ये एक स्टीरियोटाइप ब्रेक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि कुछ ऑप्शन अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ ऑप्शन बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं. It means you just have to ensure that you crack that trick how to score good marks in any Yes, option. sir. Yes, sir. अच्छा, Definitely. At the end of the day, what is being asked optional में वो question जो exact question आता है zoology का, बिल्कुल जैसे हमारा syllabus जो है बिल्कुल वैसे ही format में questions आते हैं. आप जितना ब्यूटीफुली उस डायग्राम को प्रेजेंट करते हैं और जितना एक्यूरेट आंसर्स बुलेट पॉइंट्स चाहिए होता है, क्योंकि ऑप्शनल जो होता है इट्स डिफरेंट फ्रॉम जीएस. ऑप्शनल में वी हैव टू यूज टेक्निकल लैंग्वेज उस सब्जेक्ट की. व्हेन यू नो द टेक्निकल वर्ड्स एंड यू पुट देम इन द आंसर, इट गिव्स दैट वेटेज टू द आंसर एंड यू स्कोर वेरी वेल. इंडीड. एंड ऑप्शनल कहीं ना कहीं आपका तो खैर आसान डिसीजन था, आपने ऑनर्स किया हुआ था जोलॉजी में, तो नॉर्मली मैं इस सवाल जरूर पूछता हूँ कि ऑप्शनल आपने क्यों चूज किया, बट इन योर केस इट इज क्वाइट क्लियर यू डिड योर ऑनर्स इन zoology, so it was already you had studied it a lot already. तो अगर कोई zoology ऑप्शनल लेना चाहता है, अगर उनका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड रहा भी है, एंड जेकेएस में तो ट्रेंड चल पड़ा था कि आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ले लो, तो सोशियोलॉजी वाले भी एंथ्रोपोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, जोलॉजी वाले भी एंथ्रोपोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि स्कोरिंग था. बट इस बार का रिजल्ट जो दिखने में आ रहा है, अभी तक एंथ्रोपोलॉजी की कोई ऐसी हैवी जो नॉर्मली उसका हैवी परसेंटेज सिलेक्शन में रहता था, वो इस बार दिख नहीं रहा है. सो आई बिलीव दे हैव डन सम काइंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन. अगर कोई जोलॉजी ऑप्शन लेना चाहता है, तो what are your suggestions about study material and how should they go about it? सर zoology के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटीज आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट स्टार्टिंग में हमें डेफिनेशन डालनी पड़ती है, और डेफिनेशंस हमें कौन सी याद रहती है, जो हमने बेसिक डेफिनेशंस याद रखी होती है, कोई वो टेक्निकल डेफिनेशंस नहीं. तो बेसिक्स पहले क्लियर करना, उसके बाद हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स होती है, एंड ये बहुत लंबी बुक लिस्ट है. आई शेयर इट with the students. For example, we have this लेनिंजर हो गई, हमारे सत्यनारायण हो गई, वीरबाला रस्तोगी, डिफरेंट ऑथर्स है, उनकी बुक्स कंसल्ट करते हैं. एंड अल्टीमेटली इन बुक्स को यूज करके हर टॉपिक पे अपने 2 और 3 पेजेस के नोट्स रेडी होने चाहिए. और फाइनली इन 2 और 3 पेजेस के नोट्स को आपको श्रिंक करके 5 लाइक 1 और 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स में बनाना है, सो दैट आप लास्ट में उसको रिवाइज कर सकें. मुझे लगता है नोट मेकिंग स्किल एक बहुत ही ऐसा स्किल है which is not everybody's cup of tea. I mean, especially when you have to compress a lot of notes into some 5-6 pages. So we would really appreciate if you could share those notes. You can share it via your own Telegram channel which you can create. I suggest to every selected candidate कि आप अपना Telegram group बनाएं, because you will keep facing this question again and again and again. आपके रिश्तेदार आपको पूछते रहेंगे, आपके आसपास के लोग पूछते रहेंगे कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, क्या पढ़ा, वो सवाल रिपीट होते रहते हैं. इफ यू मेक अ वीडियो ऑन इट, और इफ यू क्रिएट योर ओन टेलीग्राम चैनल, it becomes easier for you to do it. Yes, right? Definitely, because zoology optional, it's a very vast optional and vast resources. And वो भी सिर्फ not only bookish, there are internet resources also, YouTube, some Telegram channels also. I have consulted a lot of resources and then shrunk them into few, only 2 or 3 notebooks, and finally into some pages. So it took a long time, but it was very helpful. I would request you to either make a video on it, or if possible, make your own Telegram channel. If you already have a Telegram channel, just let me know. We will put that link in the description box so that people can connect with you. Okay, sir, sure. So, क्योंकि once you go into the training phase, then you would hardly find any time. Okay, sir, I'll share it. अच्छा, Ilka, what is next for you? Are you appearing for UPSC also?
Yes, sir. I'll prepare for UPSC. I'll keep on preparing for it. Great. So have you had the chance to write a mains so far No, in sir, not UPSC? yet. No, sir. So now the goalpost is shifting to the next level of UPSC, I believe. Yes, sir. That is great. So as far as the UPSC is concerned, and you'd be having the same optional zoology, right? And you're Yes, sir. already done with your notes and everything. I believe it's a natural choice to keep preparing. So what's your age right now? Sorry, sir. What's your age? My age is 25 right now. 25. So you got selected at a very young age. You still have like uh, around 7 years. You will be eligible. I hope that it doesn't take that much for you to qualify. However, you got selected at a very young age, and I hope you will be able to do it in the next one couple of years, inshallah. And we wish you all the best for that Yes, also. sir. सो इल्का, एक बहुत कॉमन सवाल होता है, आपसे भी हजारों पूछा होगा लोगों ने, अभी कितने घंटे पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, और व्हाट्स योर टाइम शेड्यूल? ये आपका आवर बेस्ड होता है कि मुझे इतने घंटे दिन में देने ही हैं, या फिर ये टारगेट बेस्ड होता है? सर बाकी सब स्टूडेंट्स का मैंने काफी सुना है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये होता है कि वी स्टार्ट आवर डे विद द न्यूज़पेपर्स and then we divide it in slots, GS1 this and that. मेरे केस में what I did target based, subject wise. For example, I kept 3 days for newspapers only. I kept 4 days for GS1 only, 5 days for GS2 only. So I did it in such a way कि it prepared my mind for mains actually, क्योंकि मेंस में you have GS1 and 2 सेम डे पे 2 पेपर होता है, तो शाम को you must be able to revise it in similar manner कि अच्छा GS1 पूरा एक टाइम पे कंपाइल करना है, GS2 पूरा एक टाइम पे कंपाइल करना है. तो हर किसी का ब्रेन वर्क्स इन अ डिफरेंट मैनर, सो दिस वर्क फॉर मी एंड दिस वर्क्स फॉर मी. ओके, आई मीन आपका ओपिनियन ये है कि इट्स नॉट कि भाई वन साइज फिट्स फॉर ऑल का फॉर्मूला है नहीं. आप अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, अपनी हैबिट के हिसाब से जो भी चीज अपने एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो टेबल करना लगे. चाहिए. मैं ये सवाल इस बार ही मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग में मैं इसलिए आ रहा हूँ. एवरी टाइम समवन इज सेलेक्टेड, तो घर में पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करना शुरू कर देते हैं कि देखो उनका हुआ, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, या फिर तुम भी यही करोगे, एंड जाओ उनके मतलब पता करो कि कितने हैं. और फिर कुछ लोग ये बोल देते हैं कि वो तो पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गए थे, वो 1 साल गए थे रूम के अंदर, फिर 1 साल बाद बाहर आए, उसके बाद उनकी सिलेक्शन हो गई. ऐसे ना मतलब मिसकंसेप्शन फैलाए जाते हैं कि अभी मुझे आज ही कोई बोल रहा था कि यार वो फलाना बंदा सिलेक्ट हुआ ना, वो 1 साल रूम से बाहर ही नहीं निकला. फिर मेरा ये सवाल था कि मैंने कहा अगर 1 साल वो रूम से बाहर ही निकला तो उसने मेंस और प्रीलिम्स दिया कैसे, तो सिलेक्ट कैसे हो गया अगर वो 1 साल रूम से बाहर नहीं आया? तो ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है. आई बिलीव देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ डिटेल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक कि भाई आइसोलेशन में जाना, इट्स लाइक इनवाइटिंग डिप्रेशन टू योर डोर, कि आप yes, सब कुछ छोड़ छाड़ के विदाउट अ पर्सन टू कंपेयर विद एंड आस्क गाइडेंस फ्रॉम, यू आर गोइंग इनटू हाइडिंग, और आपको लग रहा है कि हो जाएगा. दिस इज नॉट द वे इट इज डन. आई थिंक मे बी किसी जमाने में हुआ करता होगा, बट आज के डायनेमिक दौर में यू हैव टू बी इन टच विद पीपल एंड इंटरनेट एंड एवरीथिंग. अच्छा, इंटरनेट yes. से मेरा सेकंड सवाल ये आता है कि मोस्टली इस बार जितने लोगों से भी मैं मिला वो सोशल मीडिया से काफी हद तक दूर थे. आपका कैसा रहा? वर यू यूजिंग सोशल मीडिया ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन और नॉट? Sir, I was starting में जब I had to make a base when I had to prepare myself कि एक एक्चुअली इस प्रिपरेशन की एक लेवल होती है कि एक लेवल फील आपको आता है कि अब मुझे आंसर राइटिंग भी आती है, अब मुझे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने भी आते हैं, अब मुझे सी सैट भी आता है, अब मुझे ऑप्शनल के आंसर्स भी लिखने आते हैं. उसके बाद इफ वी get selected or do not get selected, if we want to do something else it's okay, but keep on mending those loopholes कि हाँ कहीं पे कमी रही है वो करते हैं, क्योंकि otherwise one will go into the depression अगर उस पॉइंट पे हम सिर्फ उसी चीज की तरफ लगे रहे, क्योंकि हम खुद को एक थोड़ा सा फ्री टाइम देते हैं सोचने के लिए कि यार हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, कुछ नहीं कर रहे हैं. either go for some hobbies. For example, मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव थी. मैंने अपना जो ऑनलाइन बिजनेस है वो तो मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम से ही स्टार्ट किया था, तो आई यूज टू कीप ऑन पोस्टिंग वेन एवर आई फेल्ट कि नहीं अभी मैं फ्री हूँ तो लेट मी अर्न समथिंग फ्रॉम वेयर.
सोशल मीडिया इज नॉट समथिंग कि आप उसकी वजह से अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, आप उसको प्रोडक्टिवली भी यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया को से हम चीजें सीख भी सकते हैं, कितने सारे न्यूज चैनल्स होते हैं वो पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो वी कैन गो थ्रू देम एंड लर्न न्यू थिंग्स। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई इसमें कि आपका ऑनलाइन बिजनेस भी है, इसके बारे में कुछ बताइए। सर ऑनलाइन बिजनेस तो उतना कुछ पड़ा नहीं था, बट छोटे स्केल पे था, just to keep myself busy. So it goes by the name of House of Kashmir 99 on Instagram, and ओके it is related to clothing, bags, Kashmiri products, and even the cribble curtains. So ओके नाइस। एक बार फिर से बता दीजिए ताकि सब उसको फॉलो करें। हाउस ऑफ House of underscore Kashmir 99. House of underscore Kashmir 99. So I'll ask all the people to check it out. So what Thank you, sir. motivated you to start a business? I mean, online e-commerce thing while preparing for this exam, and how did it So do? More importantly, yes, sir. So actually, it was the failure that I faced in JKPSC 2021. At that time, I felt कि नहीं, even if I am a female, I have to be financially independent किसी point of time पे. So वही है ना कि कहीं से आपको initiate करना है, छोटे से ही, लेकिन initiation is important. तो उस point पे I started this and posted one एक bag की picture, and someone from Delhi only, they ordered it, that we feel that this is good, and then I discussed with my mother ki we can do this, let's do this abhi. So my mama, she definitely supported me, but she told me कि थोड़ा सा ही, लेकिन अपना पढ़ाई में दो, 1-2 साल और अच्छे से प्रिपेयर करो, तुमने ऑलरेडी दिया है, इतना एफर्ट्स लगा है, देते रहो, ये भी करो। वो करने से रुकाया नहीं मेरे को। तो I kept on continuing it, and I received like 50 to 60 orders per month. It went oh, that well. is great. That is very decent business. I mean, it's quite good. और आपको पता है why Yes. I stressed on it? Actually, doing business is still frowned upon in our society, especially if you are already preparing for a government job. I mean, I hardly find Yes. anyone till now who was actually into active civil services, and on the side, he or she started a business entrepreneur initiative. I commend you for it, and I also commend your mother for supporting you in that initiative. And you Thank you, actually sir. आपने उन सबका मान बढ़ाया है, उन सभी लोगों का जो पढ़ भी रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। क्योंकि ये कॉमन कंसेप्शन है कि अगर आप पढ़ाई के दौरान पैसे के पीछे पढ़ोगे तो पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाएगी। सो यू स्कोर्ड अ रैंक इन टॉप 100। At the same time, you also started your own initiative, and I'm sure you outsourced the local produce of Jammu and Kashmir, and you also became the reason for someone else's income. So that is a very amazing thing. I Yes. would again ask all the people to follow that page and take inspiration. कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव चीज थी कि आपने सोचा कि completely civil services पे dependent रहना, it may be not exactly optimistic. Risky. It is very risky actually. मतलब I've seen people, very good students, very hardworking people, aspirants who have been in this process for like 7-8 years. इस list में भी many of my friends who have been in this process for like last 7-8 years, very talented, very dedicated, very hardworking people, they could not make it. और ये वो लोग हैं जो पिछले 7-8 साल से कुछ और कर भी नहीं रहे। तो imagine the level of frustration when you exhausted your attempts, and at the end of the day now they have to start from the very scratch कि करें तो करें क्या। Yes. So मैं थोड़ा सा out of civil services आना चाहूंगा। Tell me about your entrepreneurship journey. So it started just after the results only, sir, as I said, and कोई ऐसा नहीं था कि there is no experience of business in the family already, but I used to see on Instagram that many females are doing something, but they were fully into it, and that inspired me to some extent कि let me do this.
and I have this plan that I'll make a website and then hand over it to some NGO so that they can receive the income out of it. Okay, great. So you were outsourcing the product from the local artisans and then putting it on the Instagram, and you were receiving orders. Yes. Yes. And how did you do marketing? Yes. How did you reach out to the people? How come you received an order from Delhi? So my products, they came from the local artisans as well as from Hyderabad and Gujarat also. I took the stock from different regions, and then I put on the status because I had many followers on Instagram, not a large number, but something, and on your own WhatsApp personal also. account? On your own Yes, personal sir, account, yes. you had followers? Okay, okay. Yes. So you use that audience to portray your product and then funnel that audience towards your new page. Yes, and then it was like एक network जैसा बन गया था. For example, I sent this product to my friends in Karnataka, and then they shared it with their friends, and then further अपने friends के साथ. So it spread like that because the products are so beautiful. Kashmiri handicrafts are so like they can be portrayed. So that's why I received many orders immediately. And apart from that, I included all the suits also for women, like Pakistani suits, lawn suits, which are going in the trend. And there is this third party which delivers the order, and it can be delivered anywhere in India. So this was how the model was working. I think I just found the title for this video. It is going to be entrepreneur turned civil servant. And I'm sure the experience you gained in the business is going to make you a better civil servant, because now you know how to connect with people, how to reach out to the people. And being a civil servant, you're supposed to implement a lot of schemes. And we all know that आम इंसान को सरकारी पूरी स्कीमें पता भी नहीं होती हैं. If you have experience of marketing, if you have experience to reach out to the people, you can reach out the government schemes and beneficiaries and everything. So this is the first time ever I've been talking to a person who's like has an entrepreneurship experience while preparing for UPSC and JKAS, and also qualified. So are you planning to continue this entrepreneur journey along with being a civil servant or not? So now I think it's not allowed. No, I mean, you can guide someone to take over your place. And as long as you're not, someone from family can take over the reins. You can always guide people. Yes, actually, I'm thinking of handing over it to NGO so that they can get the income out of it, and then it will. Amazing. Yes, and then the women will be employed there in this case. So I'll hand it over to NGO only, because we have a NGO also in the family. Oh, great. I hope you're posted in either JKEDI or in Mission Youth, because both these organizations are trying to invigorate the spirit of entrepreneurship. Who else, who's better than you to tell people how to start a business? So this has been a learning experience for me also. I could not imagine that in the second year of preparation, anyone can actually manage both the... Now tell me, how did you manage both the things, your studies as well as your entrepreneur journey? So my study schedule was same. I did not let it get disturbed. But that free time, at that free time, I used to check which orders am I receiving, what is the stock that is ready with the artisans, or what is the stock which is ready with the like wholesalers of Gujarat. And so I kept this 1 or 2 hours separately for this, because 1 or 2 hours we usually spend on social media or with family here and there. And since I was in Jamia and or in Delhi only, so I kept that space for this thing only, because I had to bear my expenses at the end of the day. At one point I stopped asking my parents. That is how I used to manage it. So दिन में 2 घंटा financial independence को और बाकी पूरा पढ़ाई. So did it come in the way of studies, the business? No, sir, I don't think so, because उस level की preparation उस time तक हो गई थी. But yes, when I felt कि नहीं,
इस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए. Till that time I did not do anything else. Yes, I was doing masters, I was doing bachelor of education, but that was academic, that was related to studies only. But उस time पे I did not touch anything else. लेकिन एक point पे when I felt कि now I am saturated, I have to put my brain somewhere else also. So I started that. I would say that is that is the best, and in my opinion, the best way to use your free time, not just making you independence also, but also giving you a sense of contentment that you created something out of Yes. the air. You actually Yes. created something and it became a marketable model and you earned money from it. And also at the same time, you help the local artisans to earn out of something. So that is really commendable. I mean, the whole interview is going to be now about entrepreneurship. I mean, in the title, in the everything, and the thumbnail also, I would ensure that people know that it is possible to do both the things at the same time. Especially being a girl, you had this, there's very dearth of girls in entrepreneurship field, and especially in our state, it is frowned upon to do business along with studies at least. So that is a great example, and thank you for setting that example. And I would follow that page right away and maybe order something from it. Thank you, sir. Ilka, before going, I would really like to know कि आपका क्या मैसेज है उनके लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने बताया कि एक साल काफी है उस एग्जाम को डेडिकेटेड पढ़ने के लिए, उसके बाद आप बाकी चीजें भी कर सकते हो, एज यू आल्सो डिड. यू एक्सपेरिमेंटेड विद अ बिजनेस आइडिया एंड इट वर्कड फॉर यू. सो एक तो लंबा प्रोसेस है बहुत, and many people get stuck in this vicious cycle for a long time. So what is your opinion? How should a person prepare? और वो रियलिटीज जो है, रियलिटी चेक जो है स्टार्टिंग में ही कि भाई 1 2 3 4 5 साल भी लग सकते हैं, तो how should one go about this exam? So every individual का डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल हर किसी की फैमिली कंडीशंस डिफरेंट होती है, फाइनेंशियल कंडीशंस डिफरेंट होती है. सो हर इंडिविजुअल को तैयारी में आने से पहले वो चीजें आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप आ गए तैयारी में और आप बाद में फिर पछता रहे हैं कि क्यों आए, काश उस टाइम पे जॉब ज्वाइन की होती, जरूरत थी फैमिली को. तो वो चीजें नहीं करनी है. पहले अपना इंडिविजुअल लेवल पे आइडेंटिफाई करना है कि वेदर मेरे को जाना चाहिए कि नहीं. अगर जाना है तो फिर एक फुल प्लान बनाना है कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास बैकअप में क्या बचा हुआ है. ऐसा ना हो कि ये भी ना हो ये भी ना हो, तो फिर उस टाइम पे आप फ्रस्ट्रेटेड फील हो, डिप्रेस्ड फील हो, तो उसका कोई फायदा है नहीं. तो one has to identify and keep a plan B, always keep a plan B. और as the trend of UPSC and exams competition increase हो रहा है, हर बार trends change हो रहे हैं. यहाँ तक कि CSAT में ही कितने बच्चे फेल हो रहे हैं. even IITians are not able to clear CSAT अभी. तो हर इंसान को अपना एक प्लानिंग स्ट्रैटेजी एक रेडी रखनी चाहिए. और वो भी प्लानिंग ये नहीं कि 1 साल की, एक वो फुल फ्यूचर प्लानिंग कि नहीं अगर ऐसा हुआ. और आई थिंक कि इस प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम्स के लिए कुछ 2 और 3 इयर्स एक डेडिकेटेड तरीके से देना चाहिए. अगर उस पॉइंट पे लगे कि नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो एक फुल फ्लेश्ड प्लान बी पे 100% फोकस करना चाहिए. क्योंकि नाउ आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस कम्प्लीटली. और जो प्रिपेयर कर रहे हैं दे मस्ट कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड आइडेंटिफाई द लूप होल्स जितने भी है. गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स. कोई भी हेल्पफुल वीडियोस है, जैसे विंग से एक उड़ान है, वो अपनी वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, और कोर्सेज डिफरेंट है. क्योंकि गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस प्रिपरेशन के थ्रू. मैंने भी कितने मॉक्स दिए थे वहां आके. तो गाइडेंस जरूरी है, एक टारगेटेड गाइडेंस जरूरी है. और कंटेंट अपना बहुत ही अच्छा कंटेंट रेडी रखना चाहिए. नोट मेकिंग, प्रैक्टिस, मॉक्स, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट इस प्रिपरेशन में. और वो लोग जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, इट डज नॉट मीन कि यू आर नॉट यू डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी. you should keep on believing in yourself. Like last time मेरा नहीं हुआ था, तो I did not stop believing in myself. I thought कि maybe मुझ में थोड़ी कमी हो. I worked on them
बट वही एटीट्यूड लेके चलना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, अगर अभी नहीं तो कल को हो जाएगा। लेकिन हाँ ये नहीं भूलना है कि बैकअप में कुछ लेके चलना है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कुछ डेडिकेटेड ईयर्स दे दिए बस, उसके बाद कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि लाइफ गोज ऑन लाइक दैट ओनली। और कहीं ना कहीं बैकअप में अगर रहता है कोई चीज तो एग्जामिनेशन प्रेशर भी कम रहता है कि इफ आई डोंट क्वालिफाई दिस आई हैव दिस, I have यस, created this. That is a amazing example, and hopefully this message goes out there and people know what is the value of backup plan B. मैंने almost हर इंटरव्यू में बात की plan B की, and you are the first who has actually created a business as a plan B. Everyone else was like okay JKSSB और UPSC और स्टेट लेवल एग्जाम्स और एकेडमिक्स। आपका बड़ा अनकन्वेंशनल चीज था कि आपने प्लान बी को अभी बिजनेस क्रिएट किया और मार्केटेबल बिजनेस। कभी आपको वक्त मिला तो आई वुड डेफिनेटली वांट to know more about it. How did you manage it while sitting in Delhi, डेफिनेटली, outsourcing things from Kashmir, reaching out to people डेफिनेटली। in Hyderabad? पूरा पैन इंडिया सिस्टम आपने बनाया था. So I'm sure a lot of people will get motivated from this also. And thank you so much Ilka, thank you for your time and we wish you all the best. हम दुआ करते हैं कि आप एज ए ब्यूरोक्रेट भी ग्रो करें और आपका क्रिएट किया हुआ बिजनेस भी ग्रो करे, और आप एनजीओ में चाहे ग्रो करें चाहे जहां भी ग्रो करे, इट शुड कीप ग्रोइंग। एंड बहुत बहुत मुबारक हो आपको once again on behalf of all the viewers and the team wingsekudaan and Sunya IAS. We congratulate you once again. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी।